If you are diabetic or pre-diabetic, then you need to be careful while choosing your carbs. All carbohydrates are not equal. Some may cause rapid rise of blood sugar level, while others may cause slower rise of blood sugar level. So here, while choosing carbohydrates, we need to have a little knowledge about the glycemic index of a particular food. Glycemic index is a measure through which we get to know the effect of carbohydrate rich foods on our blood sugar level. Glycemic index is measured in the scale of 0 to 100, where the glycemic index of pure glucose or sugar is considered to be 100. And more the glycemic index or higher the glycemic index means rapid rise of blood sugar level and vice versa. Based on the glycemic index, carbohydrate rich foods can be divided into three categories. Firstly, foods which have a glycemic index of 0 to 55 are considered to be of low glycemic index. Such foods are basically fiber rich, most of the vegetables, fruits, whole grains which are less processed, nuts, and low fat milk and milk products. In second category includes foods having glycemic index of 56 to 69, and these are considered to be of moderate glycemic index. Such foods are brown rice, whole wheat flour, sweet potato, etc. And the third category includes foods having a glycemic index of 70 or more, which are considered to be of high glycemic index. Example of such foods are sugars, potato, white rice, processed breakfast cereals, etc., which are easily digested and so they cause the rapid rise of blood sugar level. So therefore, for a diabetic person, we need to choose complex carbohydrates which are less processed and which have a low glycemic index level. But this glycemic index is one part of the story. There is one more thing which is called the glycemic load, which gives a more clear picture of the effect of a carbohydrate rich food on our blood sugar level. For example, if we consider watermelon, then watermelon has a high glycemic index which is 72. But if you consume one serving of watermelon, which has approximately 120 grams, so it has very low carbohydrate content, and that is why its glycemic load is only 5. So while choosing carbohydrates along with considering its glycemic index, we need to know the portion size or serving size of that particular food and how much carbohydrate that particular serving contains. So this is the job of we the dietitian. So you don't have to worry about all these things. Simply you need to keep in mind that you should choose less processed and fiber rich varieties of carbohydrates, which are basically known as complex carbohydrates, over more refined simple carbohydrates. And here there is one more important point, which is certain foods which have a high glycemic index may be nutritious, or you may be fond of having them, or perhaps it is a part of your traditional food or diet. For example, in our country, in most of the states, including my native state, Assam, rice is the staple food and it is our comfort food. But for a diabetic person, few restrictions are there in rice consumption because it has a high glycemic index. But here, white rice is having high glycemic index, but we usually ask the patients to replace white rice with brown rice, which has a relatively less glycemic index. Also, one can substitute rice with millets, which again has a lower glycemic index. But for some people, consumption of brown rice or millets may be not their habit, or it may be difficult for some person to digest such foods. So instead of making it a staple or replacing altogether, one can have white rice in controlled portion.
along with foods which are low in glycemic index. As such, white rice and sugar has high glycemic index, which is almost same, but we don't consume rice alone. It is combined with fiber-rich vegetables and protein-rich dals or other foods, and also for the cooking purpose we use cooking oil or fats. So while such carbohydrate-rich foods are combined with fibers, proteins and fats, then the glycemic index of the whole meal gets reduced. And this way, while taking this complete meal, we can keep our blood sugar level within the normal range. And here there are several other factors which affect the glycemic index of carbohydrate rich foods. And here one important thing is the level of processing or type of processing that a particular food goes through, or the type of cooking method used while preparing the food, the storage, and also the time of the day when you consume such foods. All these factors may affect the glycemic index of a particular food. And also, in case of fruits, the level of ripeness also affects the glycemic index. Raw fruits are low in glycemic index, while ripe fruits are having higher level of or high glycemic index. So all these things need to be considered while planning a diabetic diet. And I will try to cover all these points in my upcoming videos. Till then, stay tuned. कार्बोहाइड्रेट रिच खाना या कार्बोहाइड्रेट जब हम चूज़ करते हैं स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो यहाँ कुछ चीज़ों के ऊपर हमें ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिसको लेने से ब्लड शुगर लेवल अचानक से बढ़ सकता है, और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो हम अगर खाते हैं तो वो ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट सिलेक्ट करने के टाइम पे हमें एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो है उस पर्टिकुलर फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा मेजर है जिससे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड का हमारे ब्लड शुगर लेवल के ऊपर उसका असर क्या होता है उसका पता चलता है। अक्सर जो खाना ज़्यादा प्रोसेस या रिफ़ाइन किया जाता है, जैसे कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी या शुगर हो गया, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, और आजकल पैकेट में मिलने वाले ज़्यादा प्रोसेस किए गए ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ऐसे फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। मतलब ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और ब्लड शुगर लेवल अचानक से ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसके विपरीत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जिन कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स में फाइबर ज़्यादा होता है, जैसे ज़्यादातर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, साबुत अनाज, नट्स या बादाम, लो फैट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और ब्लड शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ा देता है। तो एक डायबिटिक पेशेंट को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने की आदत डालनी चाहिए और सिंपल कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ कार्बोहाइड्रेट लेने के साथ साथ एक चीज़ के ऊपर और ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच खाना लेते हैं, जैसे कि चावल हो गया, रोटी या मिलेट, तो इसके साथ अगर हम फाइबर रिच वेजिटेबल्स या प्रोटीन रिच दाल और कुछ ऐसी चीज़ें, और साथ में खाना पकाते वक्त फ़ैट या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें या न्यूट्रिएंट मिल के जो एक कंप्लीट मील होता है, ये कंप्लीट मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। तो ये हमारा ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे बढ़ा के उसको मेंटेन में रखता है। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने ट्रेडिशनल थाली सिस्टम जो हम फॉलो करते थे, वो सबसे अच्छा और असरदार चीज़ है। और यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसका पोर्शन या सटीक मात्रा में उसको लेना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में आपको एक क्वालिफाइड डाइटिशियन अच्छे से समझा सकते हैं। तो इस विषय पर अपकमिंग वीडियोस में मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। तब तक स्वस्थ रहिए, और अगर पसंद आए तो ये वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।